talking about the two tests. Let me open a file. Okay, so today let's talk about two tests. One is your independent sample t-test and second is the ANOVA, right? So these are the two things, and there is another topic that yesterday somebody asked me which when to use which test. है ना? So this is the first test, second is your ANOVA, and third is your when to use which test. So these are the three topics that we'll be talking about today. So let's start with t-test. I hope hypothesis testing, everybody remembers that. Let me have a recap of this. Hypothesis testing. क्या होता है? What is this? There is no significant relationship. है ना? This is what is the, when we talk about the null hypothesis, so it is always, what is that? The statement is, there is no significant relationship. H1 में क्या होता है? What does H1 talks about? There is a significant relationship, right? So this is your alternate. So I told you it is the opposite. You know? So these two hypotheses, when we talk about hypothesis testing, null hypothesis is there is no significant relationship, and alternate hypothesis is there is a significant relationship. So these two things, these two hypotheses are inverse of each other. There is one talks about there is no significant relationship, other talks about there is a significant relationship, right? So when do we accept null hypothesis? We accept null hypothesis when the p-value is greater than 0.05, right? And alternate hypothesis, when do we accept that? So we accept this when p-value is less than 0.05. So these are the two things, right? So this is what we did yesterday. And what is another topic that we did? We talked about correlation. Correlation, I told you the value of correlation lies between -1, 0 to +1. So this is the correlation. When we are trying to find out the relationship between two variables, that is called as the correlation, right? And the value of correlation in the mathematical terms lies between -1 to +1, right? So this is the two values in which the value of the correlation lies, right? So this is -1, 0 to +1. So this is another thing. And when there is -1, 0 to -1, if it is between 0 to -1, it is negative correlation or inverse correlation between the two variables. This is negative correlation or inverse correlation. When there is 0 to 1, there is a positive correlation. There is a positive correlation or direct correlation between the two variables. So this is the another concept that we talk about. We talked about hypothesis testing, correlation, and then we talked about regression. So in regression, what are the things we talked about? Okay, let me tell you regression mein what did we talk about? We talked about dependent variable. Dependent variable is the relationship with the independent variables, right? So the impact of, what is your regression? The impact of independent variables on dependent variables. So this is what we talked about. What is your regression? Regression, we have, what is there in the regression? In regression, we have two set of variables, dependent variable and independent variable. And what do we try to find out in regression? The impact of independent variable on the dependent variable, right? And how much the independent variable
is able to explain the dependent variable. So this is what we try to find out in case of the regression. You know? And regression can be bivariate regression or multivariate. Bivariate when there is one dependent variable and one independent variable. And what is a multivariate regression? When there is one dependent variable and more than one independent variable. I hope this is clear, है ना? So this is what we did yesterday, right? So I gave you a recap of what we did yesterday, है ना? So let's proceed towards the today's session, है ना? Any doubt till here? किसी को कोई doubt इसमें जो हमने कल किया था? So this is what we did yesterday. So any doubt in this? I Ma'am, hope then it was there clear. will be more than one dependent variable then? No, that for this there has to be certain other things, other kind of tests that we have to apply. In Okay, this ma'am. Okay. case, yeah, उसमें आपको high level of regression that you have to find out. So जैसे multivariate, ये sorry, आप बहुत सारे types के regression है ना, वो आगे high level regression भी उसमें चला जाता है. जैसे logistic regression होता है. Logistic regression में होता है कि yes no value ले सकता है. यहाँ पर तो क्या है कि जब आप मल्टीवेरिएट रिग्रेशन है तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है और डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट यू हैव टू अप्लाई. मतलब है ना, जैसे एक होता है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर क्या होता है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट कैन टेक एनी टू वैल्यूज, राइट? जैसे यस नो, यस नो, है ना, या फिर यस नो मेल, यस नो, मतलब नॉर्मली यस नो, स्मोकर नॉन स्मोकर. So there are different things, right? So there are different kind of regression, but the regression that we did yesterday, so these are the things that you have to take care. I hope this is clear, right? So let's today's session, let's move to the t test, है ना? So t test करेंगे हम, और t test में भी we'll be talking about independent sample t test, right? So this is the most common used t test. Normally जो आप लगाते हो जब भी आपकी जो स्टडीज होती हैं या कुछ होता है ना, थीसिस राइटिंग होता है, सब कुछ होता है, उसमें नॉर्मली यही वाला लगता है. So independent sample t test. So let's start with this. Let me take you here. Let me start with an example. Everybody, I want each one of you to read this. Please, जो मैंने highlight किया है, I want each one of you to read this. Everybody is reading now? Yes, everybody is reading, I feel. Please write it in chat box or raise your hands. Everybody is reading whatever I have said? Okay. So please read these examples. Okay, so let's understand each one of them. A teacher wants to know if there is a significant difference in the marks obtained in the subject business research by students of two sections. So हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? What are in the first example, this example, what are the things that we have? What is the things? That is marks obtained in the subject business research. This is one variable that you have, and there are two sections. Okay, so let's say यहाँ पे 55, यहाँ पर section A, ऐसे ही होगा ना ये?
ठीक है, ये एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। और क्या मतलब हुआ, लेट्स से 45, ये सेक्शन है, ये भी ए, राइट। लेट्स से 55 मार्क्स अगेन, एंड दिस इज सेक्शन बी। इसमें क्या हुआ, 60 मार्क्स सेक्शन बी। ये समझ आ रहा है आपको एग्जाम्पल? What is the first example? Marks obtained in business research. So these are some of the marks, and there is 2 sections. So what the teacher is trying to understand from this example is, क्या 2 sections के marks में significant difference है? क्या section A के students they are more intelligent than section B? What is this teacher trying to understand? They are trying to categorize कि 2 sections हैं A and B, क्या सेक्शन ए के मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं देन सेक्शन बी? Is there any significant difference between the marks of the 2 section students? So this is the first example, है ना? This is the first example. Similarly, a manager would like to know if there is difference in the morale for the male and female employees. This is another example. Third example, a marketer would like to know if there is a buying behavior of people of 2 cities is same or different. Teacher satisfaction varies between school and college teachers. So these are some of the examples. Another example can be, let me take another example. Let's say there is a salary of the employees and their gender. So what is this? Let's say 50,000 is the salary of male M. 5 lakh, sorry, 5 lakh, okay. 6 lakh female, 44 lakh 50,000 female, 55 lakh 50,000 मेल, है ना? अब इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं? This is another example. So what is this person trying to understand? There is an organization XYZ. So everybody is getting, the employees are getting their salaries. So क्या male और female की जो salaries हैं, is there any significant difference between the salary of males and females? So what is trying to understand, is there any significant difference in the salary of males and females? So this is what he is trying to understand, right? So this example, ऊपर वाले examples में से, is there any significant difference in the marks of 2 sections, right? That is section A and B, है ना? ये जो first example था, इसमें क्या था? This is what it is there. Marks obtained in business research and 2 sections. There is, what are they trying to find out? Is there any significant difference in the marks of 2 sections, that is A and B? Second case में क्या कर रहा है वो? Is there any significant difference in the salary of males and females? क्या males को ज्यादा salary मिल रही है females से, या females को ज्यादा salary मिल रही है males से, है ना? तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? यहाँ पर आप लगाओगे टी टेस्ट. तो अब ओके, तो टी टेस्ट क्यों लगाया हमने? अब इसको भी देख लेते हैं, एक मिनट. जस्ट लुक एट दिस. ये एक टेबल बनाया मैंने, है ना? दिस इज द, ये एक टेबल है. एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक एट दिस. सबको फॉन्ट साइज वगैरह ठीक दिखाई दे रहा है इसका? आर यू पीपल एबल टू सी इट प्रॉपर्ली? यस मैम. ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, अगर जिस 2 वेरिएबल्स में हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास? ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स, हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं. सो दिस इज द एग्जांपल दैट आई विल बी टेकिंग. तो यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे पास क्या एग्जांपल है? सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड जेंडर. जेंडर कैसा वेरिएबल है हमारे पास? व्हाट इज द जेंडर? जेंडर इज अ नॉमिनल. नॉमिनल जेंडर क्या है?
जेंडर किस तरह का वेरिएबल है? नॉमिनल। हाँ जी पार्टिसिपेंट्स, जेंडर क्या है हमारे पास? नॉमिनल वेरिएबल है। और सैलरी क्या है? सैलरी क्या है? रेशो और इंटरवल स्केल। ये सबको समझ आ रहा है? हाँ जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? ये सबको समझ आ रही है चीजें? जेंडर क्या है आपका इधर? यस मैम। हाँ जी, जेंडर क्या आपका? नॉमिनल वेरिएबल है ना। और सैलरी क्या है? रेशो और इंटरवल स्केल, राइट। तो नॉमिनल और जहाँ पे ऑर्डिनल स्केल होता है, राइट, तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। जहाँ पे नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल यूज होता है, वेरिएबल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। जहाँ पे नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल यूज होता है, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं आप? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, है ना। तो और ये दूसरा क्या है? रेशो और इंटरवल स्केल, ठीक है। ये सैलरी है एम्प्लॉय की। तो टी टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है? टी टेस्ट और एनोवा आप कब एप्लीकेबल होता है? जो टी टेस्ट है, अनोवा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो उसका एक वेरिएबल है दैट हैज टू बी कैटेगोरिकल वेरिएबल, और जो दूसरा है वो क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। लुक एट दिस अगेन, इस वाले को, ये हेडिंग्स है, दीज आर द हेडिंग्स। मैं इनको डिफरेंशिएट कर देती हूँ। दीज आर द हेडिंग्स, दैट इज योर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। ये हेडिंग्स है, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। तो अब आप यहाँ पर देखिए, टी टेस्ट और अनोवा कब लगता है? जब एक वेरिएबल उसका कॉन्टिन्यूअस होगा और दूसरा वेरिएबल उसका कैटेगोरिकल होगा। ये सबको समझ में आ रही है चीजें कि एक वेरिएबल उसका कॉन्टिन्यूअस होगा और दूसरा वेरिएबल उसका कैटेगोरिकल होगा। व्हाट इज योर कैटेगोरिकल वेरिएबल? कैटेगोरिकल तब होता है जब नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल है, ठीक है। तो दिस इज, एंड दिस वेरिएबल शुड बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्लीज अंडरस्टैंड हियर, कैटेगोरिकल वेरिएबल जब आप लेते हो तो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलोगे आप? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको क्या बोलोगे आप? डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो टी टेस्ट यहाँ पर, ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी पार्टिसिपेंट्स, आर यू विद दिस? मैम प्लीज वो रेज योर रिपीट हैंड्स करना एक बार फिर से ना ये। हेलो। यस हाँ मैम रिपीट करना वो हेलो। एक बार जो पहले आपने बोला। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर बताइए। यस मैडम मैं कह रहा हूँ मैडम, ऑब्जेक्टिव एक बार लिखना, क्योंकि है ना विदाउट ऑब्जेक्टिव ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा कि ये रहा ऑब्जेक्टिव सर, लिखना। ये रहा, ये लिखा हुआ है सर मैंने, ये लिखा है, ये है हाइपोथेसिस, ये लिखा हुआ है हमने। दिस इज आवर हाइपोथेसिस, ये रहा ऑब्जेक्टिव। ये पढ़ लीजिए एक बार। इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैलरी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स? सो दिस इज अ न्यूमेरिकल, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, एंड जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज और दूसरा है जेंडर। सैलरी में आप ये ले रहे हैं न्यूमेरिकल टर्म, दिस इज अ रेशियो और इंटरवल स्केल, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं इसको। और ये वाला जो वेरिएबल है वो आपका है कैटेगोरिकल, है ना। कैटेगोरिकल, दिस इज कैटेगोरिकल वेरिएबल, and this is your hypothesis. This is the example that we are doing. Please look at this, just ignore other things. सिर्फ ये देखिए हम क्या ले रहे हैं. This is the example that we are taking, the salary of the employees and the gender of the employees. तो मैंने आपको क्या बोला, what is the condition that you have to apply the t test? t test तब अप्लाई होता है जब एक वेरिएबल कैटेगोरिकल वेरिएबल है और दूसरा जो सैलरी है वो आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है. कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल मींस रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल, और जेंडर जो है आपका वो है कैटेगोरिकल, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल. ये समझ आ रही है चीज? इज दिस क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड. मैम continuous in the form of intervals or it can be in the form of values only. numbers
numbers preferably numbers. रेशियो और इंटरवल स्केल ना, रेशियो और इंटरवल स्केल, तो नंबर्स तो आएंगे ही इसमें नॉर्मली. It may be ratio or It may be, it may be ratio or in the form of interval both. yes, right. So it will be in the ratio or Instead of, intervals. Ma'am, if हाँ जी, it can be in the I'm- form of intervals, na? हाँ इंटरवल्स, हाँ रेशियो और इंटरवल जीरो से नहीं शुरू होता. आई टोल्ड यू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेशियो एंड द इंटरवल. रेशियो स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, है ना, एंड इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ अलाउड होता है. सो द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज इज अ रेशियो स्केल. हैव यू गॉट दिस पॉइंट? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? Hello, can you hear me? I don't know who was that. Yes ma'am, yes ma'am. Okay, so this is your hypothesis and this is your question. This is through this example. ये अभी मैंने छोटा example लिया है, hypothetical example लिया, उसको हम करेंगे अभी. But this is what we are going to talk about, right? तो मैं अब आपको ये बता रही हूँ टी टेस्ट और अनोवा आपका कब लगता है. टी टेस्ट तब लगता है, टी टेस्ट और अनोवा हमारा लगता है. दिस इज व्हाट, ये आप ब्लॉक देखिए, है ना. टी टेस्ट और अनोवा तब लगता है जब एक वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है द सैलरी एंड सेकंड इज द जेंडर. तो जेंडर आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल और सेकंड दूसरा वेरिएबल सैलरी इज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. सो कौन सा टेस्ट लगेगा आपका, टी टेस्ट या अनोवा? आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टू एज वेल. टी टेस्ट और अनोवा में क्या फर्क है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. टी टेस्ट तब लगता है, यहाँ पर अब आप देखिए कैटेगराइजेशन, यहाँ पे जो आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है ये सिर्फ टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेल और फीमेल, है ना, मेल और फीमेल. और जब आप अनोवा करते हैं, एक मिनट, लेट मी टेक यू टू अनोवा. जब आप अनोवा करते हैं उसके अंदर जो आपका ये let me give an example. This is the, let's say, salary of employees again and educational qualification. Salary, let's say 5 lakh, है ना, and let's say this person is graduate. Salary is 6 lakh. The person is postgraduate. The salary is 1 lakh. He is 10th pass. The salary is, let's say, 2 lakh. He is secondary pass. ठीक है. तो अब आप यहाँ देखिए क्या फर्क है इसमें और उसमें. इसमें और उसमें इसमें हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये अनोवा का एग्जाम्पल बता रही हूँ. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनोवा. सो जस्ट लुक एट दिस. हम क्या कर रहे हैं, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में is there any significant difference in salary across the different educational levels? This is the objective, right? So यहाँ पर भी जो एक वेरिएबल है आपका ये सैलरी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. यहाँ पे जो सैलरी है वो कौन सा वेरिएबल है आपका, जो सैलरी है वो क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, राइट. और जो Ma'am, yes, ma'am. हाँ जी बोलो बोलो बेटा. Yes, ma'am. हाँ जी If बोल. salary is an interval, then नहीं, आपको इसको इसी में salary कन्वर्ट is करना in पड़ेगा. interval, नो then आप इसको कन्वर्ट कर लेना. इसमें आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे ना इसका, okay, है ना. okay. हाँ ओके. तो आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सो हम यहाँ पर व्हाट इज वी आर ट्राइंग टू डू, दैट इज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो सैलरी कौन सा वेरिएबल है आपका, कॉन्टिन्यूअस. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आपका कैटेगोरिकल. ठीक है. तो यहाँ पर भी एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा कैटेगोरिकल. तो अनोवा में भी क्या,
ANOVA में भी salary of the employee is a continuous variable, and this is a categorical variable. Now, what is the difference between t-test and ANOVA? Where do we apply? What is the difference between the two? Now, the categorical variable can be divided only in two parts. देख रहे हो आप ये? Male and female, है ना? और इधर the categorical variable can be divided into more than two. So then you apply ANOVA. When you can look both the condition, what is the condition for both the tests? One variable has to be continuous and another variable has to be categorical. So this is the requirement for both the tests. Now, what is the difference between the two? The difference between the two is categorical variable can only be divided into two parts, and here in ANOVA, the categorical variables can be divided into more than two parts. So this is the major difference between the t-test and ANOVA. I hope this point is clear to all. Please raise your hand if this point is. If this point is. Ma'am, repeat once again. Okay. I am saying, let me repeat this again. एक minute. हेलो हेलो हाँ जी मैडम, जैसे Yes. अर्बन रूरल है तो वो लेवल हो गया ना मैडम, उसका अर्बन और रूरल लेवल्स हो गया जिसको आप टाइप कर रहे हैं ना। हाँ तो यहाँ पर आ सकता है ना लेवल, है ना? यहाँ पर आप Levels. इसको ले सकते हो। हाँ बिल्कुल, इसको अर्बन अर्बन और हाँ रूरल वो भी हो सकता है। उसका यस यस अर्बन और रूरल। हाँ ये भी ले सकते हो आप। और स्कूल का जैसे ले रहे हैं मैडम, उसमें बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, सेमी स्कूल है ना, वो एजुकेशन हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेवल्स में चला जाएगा। मोर देन 2 लेवल्स और मोर देन 2 और 2 मोर देन 2 लेवल्स। हाँ जब 2 लेवल्स है तो इट विल यू कैन अप्लाई द टी टेस्ट, और जब 2 से ज्यादा है सो यू हैव टू अप्लाई द एनोवा टेस्ट, वन वे एनोवा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Clear. Okay, so let me move ahead. Ma'am, there is difference between, what's the difference between one tail and two tail ANOVA? वन, हाँ बिल्कुल है, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा। अभी आज हम वन वे अनोवा ही करेंगे, राइट, बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ टाइम। तो आज हम वन वे अनोवा ही करेंगे, इसमें वन वे अनोवा ही कवर हो पाएगा, राइट? So let's I think this thing is very much clear to all of you. ये सारा आपको क्लियर हो गया, इसका थियोरेटिकल पार्ट, है ना? So let's move to the example now. यही एग्जाम्पल लेंगे जो अभी मैंने आपको करवाया है। So let's do the T test first. Let me take you to a T test. So this is we will be applying the T test on, this is two variables. This is monthly salary, है ना, and this is the gender. So on two variables we will be applying the T test, right? So this is your gender, that is your male and female. One is for male and two is for the female. तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मंथली सैलरी एंड जेंडर। सेम एग्जाम्पल जो अभी हमने लिया है उस एग्जाम्पल को ही हम लेंगे। दिस इज व्हाट वी विल बी टेकिंग। आई होप the question is very much clear to all the participants, है ना? तो what is the question? Null hypothesis हमारा, there is no significant difference in the salary of males and female, और alternate hypothesis क्या होगा? There is a significant difference in the salary of males and females. So let's move ahead onto this. अच्छा, okay, जब हम इसको रिजल्ट को लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे। पहले let's perform the test. Right, so there are two variables, monthly salary and gender. So let's go to analyze, compare means. These are the steps. Go to analyze, compare means. इसमें हम करेंगे independent sample t test. Right, let me reset this. So इसके अंदर टेस्ट वेरिएबल में हम क्या लेंगे? मंथली सैलरी। ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? मंथली सैलरी। एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को आप यहाँ लोगे, और जो आपका जेंडर है दैट यू विल टेक इनटू द ग्रुपिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रुपिंग वेरिएबल्स में आ गया।
इसमें फिर वो बोल रहे डिफाइन ग्रुप्स, मतलब वो ये मांग रहा है कि वन और टू डिफाइन किए थे हमने वहां पर, ओके एंड ओके। आप ये देख सकते हो इधर, एक मिनट लेट मी शो यू दिस। जब मैं वेरिएबल व्यू में गई है ना, तो मैंने यहाँ पर जब जेंडर को किया तो जेंडर में मैंने क्या डाला यहाँ पर, 1 is for male and 2 is for female। लेट मी शो, देख रहे हो ये 1 is for male and 2 is for female, यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया था। तो वही चीज ये दोबारा मांग रहा है। लेट मी शो यू अगेन, गो टू एनालाइज, कंपेयर मीन्स, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, एंड यहाँ पर ये 1 और 2 मांग रहा है ना, डिफाइंड वेरिएबल ग्रुप्स, तो 1 और 2 यहाँ पे आपको पुट करना है एंड ओके। सो इट विल टेक यू टू दिस रिजल्ट्स। ये आपके रिजल्ट्स आए हैं। सो लेट मी पुट दीज रिजल्ट्स इन हियर। मैं इसको रिजल्ट्स को आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो आपके पास ये दो इंपॉर्टेंट टेबल हैं जो आएंगे। This is your first table, that is the group statistics. So group statistics में आपका क्या आ रहा है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली एंड मेल एंड फीमेल, है ना। तो n दिखा रहा है, what is n showing is the number of the sample taken from male is 35 and females कितनी sample ली है 32। फिर उसके बाद it is asking for mean दिखा रहा है, ये मीन बहुत ज्यादा आ रहा है इसका फॉर द मेल्स, एंड जो फीमेल्स है उसका मीन। ओके, सो आई टोल्ड यू देयर आर टू टेबल्स दैट इज इंपॉर्टेंट इन टी टेस्ट। फर्स्ट टेबल इज दिस टेबल, दिस वन, राइट, ग्रुप स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मीन, वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर, ये वाला एक टेबल इंपॉर्टेंट है ना। और सेकंड क्या इंपॉर्टेंट है, दिस टेबल, राइट। और उसमें क्या देखना है आपने, ये वाली वैल्यू देखनी है, टी वैल्यू, देख रहे हो आप, दिस इज योर टी वैल्यू एंड दिस इज योर पी वैल्यू। ये आपकी टी वैल्यू उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट बताया है, दैट इज 0.428। सो आई टोल्ड यू दिस दिस इज मोर देन 0.05। जो इसकी पी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इट इज मोर देन 0.05, राइट। तो जब मोर देन 0.05 होती है वैल्यू, तो आपका क्या होता है, नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करते हो, है ना। सो आप क्या करते हो, यू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05। तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी, लेट मी मेक दिस इन येलो कलर, ये 0.428 एंड दिस इज अ टी वैल्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग, दिस इज द p वैल्यू, इट इज ग्रेटर देन 0.05। तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है तो इसका क्या मतलब होता है, there is no significant difference in the salary of males and females। it means चाहे वो मेल है या फीमेल, उनकी सैलरी में कोई फर्क नहीं है। फीमेल भी सैलरी ज्यादा कमा सकती है और मेल भी ज्यादा कमा सकता है। so this is what the t test talks about। I hope this is clear to all। so I hope this is clear, है ना। तो आपको इसको लिखना कैसे, so this is how you have to write। I have one question, ma'am. हाँ जी, हाँ जी। Ma'am, can you just tell us like what would be using with the equal variance assumed and equal variance not assumed in this ANOVA table? Sorry, in this t test. Sir, actually we have two different significant level, na. One is at equal variance assumed and another one is on not equal variance assumed. So which one is to be selected and why? Yes. You have to, यहाँ पर आप इसके अंदर लेवेनिस टेस्ट को देखते हो पहले, है ना, उसके बेसिस पे आप करते हो। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो आप ऊपर वाला करते हो, नहीं तो नीचे वाला करते हो। Okay, first we have to consider with the Levenis test. Okay. Yes. Okay, right. Thank you.
Just wait, madam is disconnected due to some technical errors. So she is rejoining. सर मुझे enable करना है इसको. सर screen sharing enable. Okay. So what I was telling you was like यहाँ पर हमें दो tables का एक table बनाना है. So this is how you have to make two tables into one table when you are showing it into your paper, right? तो इसके अंदर और लिखना कैसे है? So this is how you have to write. So the t value, the degree of freedom, t value जो भी आ रही है नीचे, significant है कि नहीं और significant की value कितनी आ रही है 0.427 है ना. In the mean scores, मेल का मीन कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है और वाज हायर देन फीमेल. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. इसकी मीन वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है ना. एंड इसमें बताना है फिर नेक्स्ट मीन डिफरेंस बताना है कितना है. ये यहाँ पर आप देख सकते हो मीन डिफरेंस. दिस इज द मीन डिफरेंस है ना. और उसके बाद मीन डिफरेंस बताना है. फिर उसके बाद यहाँ पे ये बताना है क्लास इंटरवल कितने से कितने के बीच में है. एंड हेंस H1 was not supported. So this is how you have to, because हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, H1 सपोर्ट नहीं हुआ है ना. H1 हमारा सपोर्ट नहीं हुआ है. तो this is how you have to write this into your paper. So this is the complete example of the t-test. I hope this is clear. I hope it is clear. Yes. Is it clear? Are you there? Am I audible? Yes, ma'am. Is this clear? Yes, I'll ma'am. share this example. ये सिर्फ theoretical part है कि इसको आपको जब आप पेपर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको प्रेजेंट कैसे करना है. So this is what you have to do when you are writing a paper, है ना. तो this is the writing part that you will be doing into your paper. Fine. So this is how you have to do the analysis for your t-test. So let's move to the ANOVA test. So ANOVA test में the example that I gave you, education with the monthly salary. So this is what we'll be talking about. So this is another example, that is salary and the
salary of the employees and the qualification, right? So let's move to this. यहाँ पर हमने define कर दिया इसको values में, illiterate, primary, secondary, graduation and post graduation, right? Okay करा. तो यहाँ पे go to analyze, compare means. This is one way ANOVA, right? So let me reset this. हमारा डिपेंडेंट में क्या आएगा, एवरेज मंथली सैलरी, और एजुकेशन कहाँ पर आएगा, फैक्टर में, राइट? तो यहाँ पर हमने क्या करना है, होमोजेनिटी टेस्ट को करना है क्लिक, राइट? एंड हमने पोस्ट हॉक को भी करना है. हम इसमें क्या देखना चाहते हैं, इसमें अब एक चीज है इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर इज जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 10th और सेकेंडरी. चलो पहले एक ही चीज करते हैं, है ना? लेट्स डू दिस ओनली. This is the test, right? This is the two tables, right? This is the two tables, that is the first table and this is the second table, right? तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो 11 स्टैटिस्टिक्स आया, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी फॉर वेरिएंस आया सिग्निफिकेंट, और यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट आया. सो देयर आर टू टेबल्स. दिस इज अनोवा टेबल एंड इट इज शोइंग, व्हाट इट इज शोइंग, दैट इट इज लेस देन 0.05. यहाँ पर जो हमारे पास पी वैल्यू आई है वो क्या आई है, दैट इज लेस देन 0.05. ये वैल्यू आई है हमारे पास, है ना? इसके अंदर तो ये हमारा, अगर p वैल्यू लेस देन 0.05 आती है तो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है. व्हाट डू वी डू, अगर ये p वैल्यू इज लेस देन 0.05, सो व्हाट डू वी डू इज वी एक्सेप्ट the null alternate hypothesis. So this is what we do that. Right? तो हमारा क्या क्वेश्चन था इसके अंदर, हमारा क्वेश्चन था सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो हम ये देखना चाह रहे थे कि ये डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन हैं डिफरेंट लोग और उनकी ये सैलरी है ना? तो क्या इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एजुकेशनल, अगर कोई बंदा 10th पास है या सेकेंडरी पास है उसकी जो सैलरी है वो कम है या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. तो हमारे में क्या आया है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस कि अगर कोई पर्सन, हमारा क्या आंसर रिस्पॉन्स क्या है इसमें, p वैल्यू इज लेस देन 0.05 आई है, राइट? तो हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे. एंड व्हाट इज द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वी एक्सेप्ट द there is a significant difference. So what is accepted is your alternate hypothesis. And what does this mean? There is a significant difference in salaries across the different educational level. So this is what the hypothesis is accepted, right? So this is one thing. उसके बाद हम ये देखना चाहेंगे now एक चीज इसमें कि लाइक मॉडल तो सक्सेस हो रहा है, मतलब ये कह रहा है, तो आगे हम इसको पोस्ट हॉक टेस्ट लगाएंगे इसमें, है ना? और इसको लिखेंगे कैसे वो आई शो यू विद दैट. देयर इज वन वेबसाइट अभी नई खुली हुई है, सो आई शो यू हाउ यू हैव टू राइट दिस. इट इज ऑलमोस्ट द सिमिलर वे दैट वी हैव रिटन इट हियर. जब आपको पेपर में दिखाना है अपने, इफ यू राइटिंग योर पेपर, तो आपको कुछ इस तरह से ही दिखाना है पूरा, है ना? तो ये मैं आपको आई शेयर दिस वर्ड फाइल विद यू, और उसमें मैं आपको लिख के दिखा दूंगी कि किस तरह से इसको लिखना है. इट विल टेक टाइम, अभी अगर लिखना है तो मैं आपको इसमें पूरा लिख के दिखा दूंगी कि किस तरह से इसको लिखना है, राइट? तो उसमें अच्छा एक चीज और करनी है, इसके बाद हमें क्या करना है, पोस्ट ऑफ टेस्ट लगाना है. पोस्ट ऑफ टेस्ट में हम ये देखेंगे, पोस्ट ऑफ टेस्ट में हम ये देखेंगे कि लेट्स डू द टुकी टेस्ट एंड दिस इज लेट्स डू इट. एंड इसके अंदर मल्टीपल कंपैरिजंस, मल्टीपल कंपैरिजंस मींस लाइक बिटवीन देम, लाइक इलिटरेट और प्राइमरी में क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये कह रहा है नहीं. इलिटरेट और सेकेंडरी पीपल की सैलरी में कोई फर्क है, नहीं. किसमें ज्यादा फर्क है, इलिटरेट और ग्रेजुएट जो पर्सन है उसकी सैलरी. ये टेबल दिखाई दे रहा है आप सभी को? मैं एक मिनट इसको एक विंडो में खोलती हूँ, रुको.
लेट मी शो इट हियर नाउ। इसके अंदर क्या कर रहा है, मल्टीपल कंपैरिजंस कर रहा है। हमने अभी क्या देखा कि हमारा मॉडल जो है वो तो रन कर रहा है, ठीक है, हमारा जो मॉडल है वो रन कर रहा है और उसके अंदर क्या दिखा रहा है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नाउ वी विल बी मूविंग अहेड वन स्टेप फर्दर नाउ। अब हमने इसके बियॉन्ड एक स्टेप पे जाना है। बियॉन्ड एक स्टेप का क्या मतलब है, अब हमने मल्टीपल कंपैरिजन करने इन बिटवीन। तो जैसे हमने मल्टीपल कंपैरिजन में कैसे करना है, इलिटरेट का कंपैरिजन करना है प्राइमरी, क्या इन दोनों में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, कोई पर्सन इलिटरेट और प्राइमरी है तो यहाँ पर नो आ रहा है। इलिटरेट और सेकेंडरी डिवीजन पास है बंदा, उसकी सैलरी में कोई फर्क है तो वो भी ना आ रहा है, लेकिन इलिटरेट और ग्रेजुएट कोई पर्सन है उसकी सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। तो ये मल्टीपल कंपैरिजन है। अब हमने क्या किया है, ये एक स्टेप फर्दर किया अनोवा से, दैट इज कॉल्ड एज योर पोस्ट हॉक टेस्ट। Are you all getting it? Please raise your hands if it is clear. हाँ जी, repeat it once. हाँ, okay, I'll do that. एक मिनट दीजिए। So what I'm trying to tell you, मैं आपको ये बता रही हूँ, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले ओवरऑल मॉडल वी हैव ट्राई टू चेक। सबसे पहले हमने क्या किया, ओवरऑल मॉडल को देखा और मॉडल क्या आ रहा है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, राइट। नाउ उसके बाद हमें मल्टीपल कंपैरिजन करने हैं विद द हेल्प ऑफ अ पोस्ट होक टेस्ट। जो सेकंड स्टेप है नोवा का वो क्या है, पोस्ट होक टेस्ट। पोस्ट होक टेस्ट के अंदर आपको क्या करना है, जैसे इलिटरेट का कंपैरिजन किससे हो गया, प्राइमरी से, कि इनकी सैलरी में भी कोई पर्सन अगर इलिटरेट है और प्राइमरी पास है कि उनकी सैलरी में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो आंसर आ रहा है फर्स्ट केस में नो। सेकंड है इलिटरेट और सेकेंडरी पास बंदा है, उसकी सैलरी में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, नो। इलिटरेट और ग्रेजुएट पास है, उसकी सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यस। आप देख रहे हो यहाँ पे पी वैल्यूज कितनी आ रही है, दिस इज ग्रेटर देन 0.05, ये फर्स्ट टू जो आ रही है। हाँ जी, हाँ जी विभूति, यू आर सेइंग समथिंग। यस मैम, बट एसपीएसएस में हम इसको कैसे करेंगे, मतलब स्टेप क्या बताए थे आपने, इसको वहां पे रन करने ये के? हाँ, दिस इज एनालाइज, कंपेयर मीन्स, वन वे एनोवा एंड पोस्ट हॉक टेस्ट। ये बहुत सारे टेस्ट हैं, अभी मैंने टुकी टेस्ट को किया है सिलेक्ट एंड कंटिन्यू कर दिया एंड ओके। तो आपके पास ये एक और इसके अंदर निकल के आएगा, दिस इज पोस्ट हॉक टेस्ट और उसके ऊपर लिखा हुआ मल्टीपल कंपैरिजंस। कैन यू सी टू दिस, ये टेबल निकल के आया मल्टीपल, कंपैरिजंस। ओके ओके ओके। विद इन लेवल्स का कंपैरिजन है क्या मैडम, विद इन लेवल्स, इफ वी आर ट्राई टू सी द विद इन लेवल्स देन वी हैव टू जी जी यूज द जी पोस्ट जी ऑफ। जी 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 जी, मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि आपस में मैम आपका जो मॉडल आया, जो आपका मॉडल, एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन, जो आपका मॉडल आया अनोवा टेबल आपको क्या बता रहा है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैलरी ऑफ द पीपल विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशनल लेवल, है सिग्निफिकेंट डिफरेंस। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप अहेड जाते हो, उसमें आप मल्टीपल कंपैरिजन करते हो। मल्टीपल कंपैरिजन का मतलब होता है इलिटरेट का सबके साथ, फिर प्राइमरी जो एजुकेशन वाला बंदा है जिसकी एजुकेशन लेवल प्राइमरी है तो उसका फर्दर जितने भी बाकी सारे लेवल्स हैं, फिर सेकेंडरी का, ये सारा इस तरह से मल्टीपल कंपैरिजन होता है। तो हमने यहाँ पे देखा इलिटरेट का टू प्राइमरी, है ना, इलिटरेट का प्राइमरी, तो सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको ये वाला जो कॉलम है उसको देखना है आपको, दिस इज द सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो इसको देखना है। तो इलिटरेट का प्राइमरी से देखना है तो कितना आ रहा है 0.919, तो ये 0.05 से बड़ा है, तो इट मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। आर यू गेटिंग इट दिस मैम पॉइंट? ये वन वे, यस मैम, ये वन वे अनोवा पे जाके वहां पे हमने करना है ना, वेरिएबल डालने के बाद पोस्ट हाँ हॉक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका एनालाइज आ गया, वही जो अभी किया ना उसी में तो करना है, कंपेयर मीन्स एंड वन वे एनोवा, यही तो किया अभी हमने, उसी के अंदर ही पोस्ट हॉक नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। कैन यू सी दिस पोस्ट हॉक ऑप्शन? यस मैम, यस मैम। उस पे क्लिक करना है और उसमें वेरियस टूल्स टेस्ट है, अभी आप उसमें टुकी टेस्ट को कर दीजिए एंड देन ओके करके आपको ये रिजल्ट नजर आएगा। सो दिस इज द रिजल्ट दैट यू विल गेट, मल्टीपल कंपैरिजन, फर्दर जो कंपैरिजन होते हैं वो। ओके मैम, थैंक यू।